चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो जी, जैसा कि आपको पता है, हमारा आज का टॉपिक है स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, और इसी से रिलेटेड चूंकि 2021 का फिजिक्स नोबेल प्राइज जिन लोगों को दिया गया, उनके काम में भी ऐसे प्रोसेसेस शामिल थे जिन्हें हम स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस की टेक्निक्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम फिजिक्स और मैथ का ये एक कॉम्बिनेशन जो है वो बना लें, और एक मैथमेटिशियन को दावत दें कि वो हमें जो है वो थोड़ा सा बताएं कि एक्चुअली ये इक्वेशंस दिखती कैसी हैं और काम कैसा करती हैं। तो डॉक्टर जावेद हुसैन जो है वो सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी में हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ को हेड कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद ने पीएचडी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूके से की, और इनका पीएचडी का जो टॉपिक था वो भी डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक एवोल्यूशन इक्वेशंस जो हैं, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस के लिए, उससे रिलेटेड था। और हमारे तो ये कायदियन भाई भी हैं, क्योंकि इन्होंने भी एमएससी और एमफिल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया मैथ के अंदर। तो हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि आज इन्होंने हमें वक्त दिया है। सो डॉक्टर जावेद, यू कैन स्टार्ट नाउ। जी, so thank you very much for your kind introduction, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का। I don't know that आप लोग जो है या जो स्टूडेंट्स है वो मेरी सारी डिस्कशन से कितना सीखेंगे, बट आपकी इस इनविटेशन ने मुझे पुश किया कि मैं बहुत सारी चीजें मैंने सीखी इसी बहाने, दैट जो कि I didn't knew them before actually, especially that कि physics में किस तरह से stochastic processes जो है वो involve हो रहे हैं। So I'll try कि मेरी talk बहुत ज़्यादा technical ना हो, but sometimes वो हो भी जाएगी। I'll try कि मैं ज़्यादातर pictures के through बात करूँ। अगर कहीं questions आती हैं तो अगर आपने ignore करना चाहें तो आपने ignore भी कर सकते हैं। और I want to make it kind of more of interactive। किसी भी जगह किसी भी वक्त अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, तो आप जरूर डिस्कस भी कर सकते हैं। चलें जी, so let's start with a breakdown of the talk। So जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, I'll try to convince some of the physicists basically, जो young बच्चे हैं, कि भाई उनको क्यों stochastic processes जो है वो सीखने चाहिए, क्यों उनके लिए इंटरेस्टिंग है। फिर मैं कुछ एनालॉजीज की बात करूंगा जिनकी मदद से हम समझ सकते हैं कि भाई ये जो डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेसेस हैं या स्टोचैस्टिक प्रोसेसेस हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। I'll talk about quickly central limit theorem, then I'll talk about Brownian motion and the calculus of Brownian motion, and then I'll move towards something that I know nothing actually. Take so Nobel Prize, Physics Nobel Prize. So I'll try to explain what I can do. मेरी कोशिश ये होगी कि जो मैं समझ सका हूँ, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है नोबेल प्राइज 2021 का जो उन्होंने रखा हुआ है, उसमें से जो मैं चीजें समझ पाया, और फिर उनमें जो रेफरेंसेस हैं, स्पेशली जो ओरिजिनल वर्क है मनाबे का, हेसलमैन का और पेरेसी का, उन सब को रेफर करके जो मैं समझ पाया हूँ, वो मैं आपके सामने अपनी टूटी फूटी समझ जो है वो रख सकूं। So let's start with the first question, that why a physicist should be interested in stochastic processes basically। इसलिए because एक पूरा dimension नया evolve हो रहा है, हो चुका है। I mean, stochastic processes really is like a baby field। It's an infant as compared to, for example, algebra, analysis, or geometry, classically very old fields हैं। Stochastics is really a new phenomena basically। So ढेर सारा physics जिसे आप usually कर रहे होते हैं in the sense of non-stochastic setting, आप उसको stochastic setting में कर सकते हैं। So you have stochastic mechanics, stochastic quantum mechanics, stochastic electrodynamics, stochastic signal processing. So you have everything that is done in the terms of Newtonian calculus. You can redo it
okay, in the terms of stochastic calculus. And why you need to do it, because अक्सर व पेशतर हम अपने डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स में जो मॉडल्स हम कंसिडर कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम अगर ना समझ रहे हो या अगर वो प्रेडिक्टेबल ना हो तो फिर हम उन्हें उनकी एवरेज अज्यूम कर देते हैं, वी जस्ट इग्नोर देम, या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उनको हम एक डिटर्मिनिस्टिक क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट करने लगते हैं। और इस वजह से जो हमारे मॉडल्स हैं they are often what you call approximation to the reality than the reality actually. Anyway, so it's worthwhile exploring actually. Stochastic, जिस तरह आपके पास different interpretations हैं quantum mechanics की, Copenhagen, shut up and calculate, and manual interpretation. So you also have what you call the stochastic interpretation basically by Mary Fine. उसका dumbed down version ये है कि जो space time fluctuations हैं ये reason है quantum mechanics का, ना कि result actually, ठीक है? So you can explore it more. एक मैं पेपर की तरफ जरूर रेफर करना चाहूंगा आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि स्टोचैस्टिक मैकेनिक्स में अब तक क्या हुआ है। अब तक से मुराद ये है कि 2012 तक जब ये पब्लिश हुआ था कि क्या सक्सेसेस हैं स्टोचैस्टिक मैकेनिक्स की, स्टोचैस्टिक फिजिक्स की, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, कैसे बहुत सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स की यू कैन अंडरस्टैंड देम इन अ वेरी प्रिसाइज एंड नाइस स्वीट मैनर थ्रू स्टोचैस्टिक्स। मगर बात चीजें ऐसी भी हैं कि जिनको आप जो कि मैच नहीं करती हमारी ऑब्जर्वेशन से और डाटा से। सो इट्स अ गुड पेपर एक्चुअली अगर आप देखना चाहते हैं तो। Interestingly, there's a beautiful book actually which you can explore actually, that you can have a unification of relativity of quantum theory and quantum theory and stochastic basically. Quantum theory and relativity and quantum theory based on the stochastic principles actually. So it's like worthwhile exploring. So I invite especially जो हमारे फिजिक्स के अहबाब हैं कि वो इस तरफ भी ध्यान दें। और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टोचैस्टिक सीखना। तकरीबन जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है उसी मैथमेटिक्स की बुनियाद पर आप चीजें कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, you need some linear algebra, you need some calculus, you need some so the basic logic rules. So चंद चीजें बुनियादी चाहिए जो कि सबको आ रही होती हैं, तो बहुत आसानी से आप स्टोचैस्टिक सीख सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि हमें इस ट्रेड की तरफ भी जरूर सोचना चाहिए। I was recently listening some of lectures in especially वो लोग जो कॉन्शियसनेस को मॉडल करना चाह रहे हैं या फाउंडेशनल इश्यूज को डील कर रहे हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स, वो बहुत सारे places पर they are using extensively stochastic processes basically. So अगर आप stochastic processes सीखते हैं तो बहुत सारी ऐसी नई चीजें, नया फिजिक्स, नया जो नए आइडियाज जो सोचे जा रहे हैं वो आपकी एक्सेस में आ जाएंगे। सो आई रियली वांट के आप लोग जो हैं जो फिजिक्स के अहबाब हैं वो इस तरफ तवज्जो करें। Anyway, so let's try to make sense of deterministic versus, what do you mean by deterministic versus stochastic actually? So let's start with, for example, dances. So हम मुख्तलिफ किस्म के dances देख रहे होते हैं। बाज़ dances जो हैं वो folk dances होते हैं, ठीक है, बड़े मजे के dances होते हैं। folk dances की एक खास बात है, ठीक है, कि वो चंद steps होते हैं जो कि repeat हो रहे होते हैं basically, roughly. I hope that you all agree with me that के folk dances, चाहे वो सराइकी हो, अतण हो या कोई भी डांस हो, चंद स्टेप्स हैं जो कि kind of repeat हो रहे होते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डांस है, फोक डांस है, उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और आप उसका पर्टिकुलर स्टेप देखते हैं कि ये वाला स्टेप हो रहा है, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि उससे अगला स्टेप क्या होगा इस डांस में, और फिर उससे अगला स्टेप क्या होगा इस डांस में, अगर आप वो डांस जानते हैं। Obviously this is the basic assumption actually, that if you know the one step of say the folk dance, you can know the all steps that you have in the future actually, ठीक है। So that would be an example of what you call, I'm going to say that's a deterministic dance actually, that अगर आप
एक नुक्ते पर उसे जानते हैं तो फिर आप उसे फ्यूचर में तमाम उसके फ्यूचर तमाम स्टेट्स जो हैं या तमाम स्टेप्स जो हैं वो जान सकते हैं. What are the other dances? The other dances are the crazy dances, you know, like hip hop and robotic dances and, you know, this and that. Think about the hip hop basically. ठीक है, you know, हो क्या रहा होता है, यानी वो इस तरह से डांस कर रहे होते हैं कि आपको ये नहीं पता होता बिल्कुल भी यानी इस स्टेप के बाद अगला स्टेप कौन सा होने वाला है. ठीक है, that's what I would say that mainly makes this dance, you know, the kind of pop dance या hip hop dance जो है उसे different बना रहा होता है as compared to say for example folk dances actually. ठीक है, यानी इन dances में हम क्या कहेंगे कि क्या difference है, ये difference है कि अगर आप एक स्टेप जान you know ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उससे अगला स्टेप क्या होगा, you know, you have no idea actually. ठीक है, you can't just predict it with a precision actually. ठीक है, so I'm going to say that कि ये जो dances हैं ये stochastic dances हैं, kind of random dances हैं. Though they are not truly random, but you know at least they appear random to us actually. ठीक है, because जो choreographer है उसे तो पता होता है कि what's going on basically, इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होगा. Anyway, ठीक है जी. So अब अगर मैं आपसे कहूं कि you are looking at a dance, ठीक है, तो फिर आपके पास ये डेटाबेस ऑफ डांसेस हैं, तो कहेंगे जी अच्छा जी ये जो डांस है, यू नो, नया डांस जो मैं देख रहा हूँ, क्या ये फोक डांस है, अगर वो इन डांसेस में से किसी डांस से मैच करता है तो फोक डांस है. ऐसा भी हो सकता है कि एक डांस जो है वो काइंड ऑफ सुपरपोजिशन हो दो डांसेस की, यानी दो फोक डांसेस को मिक्स करके आपने एक डांस बनाया है, बट स्टिल आई कैन रिकॉग्नाइज इट दैट कि अच्छा ये फोक डांस ही है, वर्जन ऑफ फोक डांस है. या फिर वो डांस जो है वो यू नो इन डांसेस में से हिप हॉप एंड ऑल दैट डांसेस में से ही एक डांस होगा. सो ये अननोन डांस या तो इस डेटाबेस ऑफ डांसेस में से किसी डांस कोई डांस होगा या फिर यू नो एक ऐसा डांस होगा कि जो कि सुपरपोजिशन होगा, रफली लीनियर कॉम्बिनेशन होगा बेसिकली ऑफ द डांसेस ऑफ ऑल दीस बेसिकली. ठीक है, अगर ये डांस किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं करता तो मैं इस डांस को यू नो एक नई कैटेगरी ऑफ डांस के तौर पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा अपने डेटाबेस में. ठीक है नहीं, सो दैट्स व्हाट इज सो आई होप के थोड़ा सा समझ आया डिटर्मिनिस्टिक डांस से क्या मुराद होगी, यू नो इस किस्म का डांस यू नो जो कि जिसमें एक स्टेप अगर आप जान लें तो फिर अगले तमाम स्टेप्स जान सकते हैं. स्टोकास्टिक ये रैंडम या यू नो मॉडर्न डांस से क्या मुराद होगी, ऐसा डांस के जिसमें अगर आप एक स्टेप जानते हैं तो उससे अगले स्टेप्स क्या होंगे, यू हैव नो आइडिया, यू कैन प्रिडिक्ट देम, यू नो यू कैन से दैट कि चलिए तकरीबन ये क्या करेगा, बट यू कैन से इट विद द प्रिसिशन बेसिकली. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द a bit more what do you call picture. So what I'm going to do, I'm going to draw some graphs here. ठीक है, और हमारा एक टर्टल होगा जो टर्टल यू नो इस बीची रीजन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा यूजिंग आवर ग्राफ एक्चुअली. ठीक है, so let's draw a graph. So for example, I'm saying that okay, let's draw a linear graph actually. Is it working? काम करना चाहिए. And let's run it. So what do you say? हम कहेंगे या हम कह सकते हैं कि अच्छा ये जो टर्टल है, ये टर्टल इस पैटर्न को या इस लॉ को या इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है when the turtle is kind of moving actually. ठीक है, अच्छा मैं एक और फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूँ ग्राफ. सो लेट्स ड्रॉ समथिंग दैट इज पैराबोलिक. ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो जी एक टर्टल है जो कि इस लीनियर ग्राफ को फॉलो कर रहा है और दूसरा टर्टल है जो कि यू नो फॉर एग्जांपल इस पैराबोलिक ग्राफ को फॉलो कर रहा है. फॉर एग्जांपल मैं एक और ग्राफ बना देता हूँ. आई कैन मेक नंबर ऑफ ग्राफ्स. ठीक है, and then you can see that ये वाला turtle जो है like this is kind of moving a bit faster, so it's like comparing with the time with the distance obviously, then you can interpret the motion of the turtle through these graphs actually. ठीक है, मगर इन तीनों ग्राफ्स में कुछ कॉमन है और वो कॉमन क्या है,
वो कॉमन ये है कि अगर आप इस ग्राफ को या इस कर्व को या इस लॉ को समझ लेते हैं, तो फिर अगर आप इस टर्टल के मोशन को एक नुक्ते से ऑब्जर्व करना, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, किसी एक नुक्ते से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो हम उसके वी कैन मेक अ प्रेडिक्शन एक्चुअली दैट कि ये फ्यूचर में कैसे इवॉल्व होगा, यानी मैं फ्यूचर तमाम स्टेट्स जो हैं या जिस तरह ये टर्टल मूव करेगा, ठीक है, मैं उसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ विद अ सर्टेनिटी बेसिकली, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो टर्टल लॉ फॉलो कर रहा है वो लॉ एक नाइस सा स्वीट सा फंक्शन है बेसिकली, ठीक है, जिसमें कोई काइंड ऑफ रैंडमनेस मौजूद नहीं है, ठीक है। Alright, so I hope you got some sense out of it, but let's now take for example another graph. So अगर मैं एक नाइस स्वीट फंक्शंस जो यूजुअली आप आम डेज में पढ़ रहे होते हैं वो ड्रॉ करता हूं, तो that is basically these are the deterministic functions. But let's just draw something like this actually, okay. Why this pen is not working, but let's draw something like this, okay. Something like this. And let's see that turtle जो है वो क्या कर रहा है, लग रहा है कि टर्टल जो है वो कुछ शराय फैसल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और जस्ट शान कर दिया आपने टर्टल को। ठीक है जी। सो आई वुड से दैट कि like I can make another trajectory for example for turtle, सकता है follows this trajectory, I can make number of trajectories for example, ठीक है। इस मोशन और जो पिछले मोशन थे उनमें क्या फर्क है? एक जो बुनियादी फर्क है वो आप ये समझ सकते हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं कि कि इसमें अगर आप किसी एक नुक्ते पर ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं इस टर्टल को, तो फिर उस टर्टल का अगला मूव क्या होगा, यू कांट से इट विद सर्टेनिटी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, फॉर अ गिवन इनिशियल कंडीशन, what would be the precise trajectory, precise path that for example turtle will follow, you have no idea, ठीक है। You can make predictions, predict कर सकते हैं, which are probable paths and which are not probable paths and so on and so forth. हो सकता है कि इस नुक्ते के बाद जो है ना टर्टल कुछ न्यू इस तरह से मूव करना शुरू करते हैं, so on and so forth, ठीक है। So that's kind of randomness, that's stochasticity, ठीक है। और ये एक किस्म की stochasticity है, ठीक है, the basic stochasticity. तो mostly जिस stochasticity से हम for example applied sciences में मॉडल कर रहे होते हैं चीजें, वो यही और इसी किस्म की stochasticity होती है। इसका मैं नाम भी थोड़ी देर में रखता हूँ। But for example, अब आओ ये randomness देखिए कि अच्छा, you have this and then something like this and something like this, and then इस randomness को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, differentiate करेंगे towards the, say for example from the previous randomness actually. So you can say that कि अच्छा ये भी random है, सबसे पहले जो previous trajectory थी वो भी continuous थी, ये भी continuous ही है, मगर बाज नुक्ते ऐसे हैं कि जहां पर kind of you have randomness but you have a jumps actually, ठीक है। So you have jumps, so you can have randomness, continuous trajectory of randomness, but you can have also what you call jumps actually. तो इनको हम इस किस्म के processes को या इस किस्म के evolution को हम कहते हैं कि that's basically the randomness with jumps, okay. All right. By the way, if anyone wants to ask question or add subtract anything, please जावेद भाई, जी 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 इन ग्राफ्स को देख के पहले जो आपने ग्राफ बनाए थे वो जी जरा लीनियर थे या क्वाड्रेटिक थे और फेमिलियर फॉर्म्स थी। जी 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 अभी वाले जो ग्राफ हैं, अब देखने में ऐसा लग रहा है कि जी ये भी तो एक तस्वीर, एक ग्राफ ही है ना, जो जिसको हमने ड्रा किया है और टर्टल उसको फॉलो कर रहा है। इसको हम क्यों रैंडम कह रहे हैं? Exactly. एक तो you can see the randomness basically in the motion of what do you call the particle, ठीक है। But ये curves क्यों fundamentally different हैं from other curves? I'm gonna talk in a moment about it. That they have a fractal behavior actually.
ठीक है, मैं बात करता हूं अभी इस तरफ. Let me introduce another kind of, say for example, randomness basically. ठीक है, that in which you have, say for example, मैं trajectory लेता हूं, ठीक है, time versus distance, but now you know something like this is happening. ठीक है, now what are you going to say that यहाँ क्या हो रहा है? So you have a random paths, ठीक है, but this random path has now discontinuities actually. ये एक और तरह की randomness है, ठीक है. So even it's like a crazy idea, पहली दफा जब मैं I was talking with an old economist actually, उसे बताया कि नहीं randomness को भी हम classify कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ये randomness different है दूसरे से. तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कैंटर को लोग पागल कहते थे ना कि some infinities can be different than other actually, infinity is infinity. How can be some infinities being different than others? So randomness is randomness. But we can classify randomness. तो इस किस्म की randomness को हम कहते हैं usually आम term में, so we call them the Levy type randomness actually. ठीक है, the Levy type randomness, the Levy noise or the Levy processes basically. Anyway, ठीक है जी. So I hope you got some idea. अच्छा, अब अगर मैं ये तीन किस्म की रैंडमनेस, एक हम देखा जी कंटिन्यूअस ट्रैजेक्टरीज हो, ठीक है, I'm going to call it Brownian motion. That's Brownian motion basically, अगर उसमें पास खासियतें हो. Then we saw kind of Brownian motion with jumps, ठीक है, और फिर ये तीसरी है कि जिसमें you have these trajectories, but you can't call them Brownian motion because you don't have a continuity. यहाँ breaks हैं, तो you're going to call them Levy kind of noise actually. ठीक है, चलो एक छोटा सा क्विज है. क्विज ये है कि जी ये जो मोशन है इसे जरा प्रेडिक्ट करके बताएं, या बताएं कि ये कौन सा मोशन है. So it's like the turtle is moving randomly. तो ये तीन जो क्लासेस हमने देखी मोशन की, तो उसमें से किस क्लास ऑफ रैंडमनेस पर इसको फिट करेंगे, एक दफा फिर से हम देख लेते हैं. कौन सा, किस किस्म का ये मोशन है? एनीवन, कोई चैट में भी बता सकता है, अगर कोई. That's Levy type, type noise, because क्या हो रहा है, so it's like moving and then there are certain points actually where it not necessarily Levy, not necessarily Levy नहीं होगा. Levy अगर होता तो ये गुम हो जाता, ठीक है. Anyway, so I hope that you got some sense, ठीक है, कि बाज ट्रैजेक्टरीज जो हैं वो डिटरमिनिस्टिक होती हैं बिकॉज हमें उनका लॉ पता है, हमें फंक्शन पता है कि जिस फंक्शन को वो उस ऑब्जेक्ट का, उस पार्टिकल का, उस चीज का मोशन फॉलो कर रहा है. मगर बाज ट्रैजेक्टरीज फिर ऐसी है कि जिनमें यू डोंट हैव व्हाट यू कॉल अ पर्टिकुलर पैटर्न. आप उनको अगर कैद करना चाहें किसी फंक्शन की शक्ल में तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है. फिर हम उनको प्रोबेबिलिटीज की शक्ल में कैद करने की कोशिश करते हैं, ना कि फंक्शंस की शक्ल में. चलो फंक्शंस को हम प्रोसेसेस से रिप्लेस कर देते हैं. चलें जी. सो आई होप दैट यू गॉट सम सेंस. आई विल गेट बैक टू पिक्चर्स अगेन. अच्छा जी, मिसालें क्या हैं फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन इक्वेशंस की. जब हम एक डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं, तो तमाम किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशंस, एवोल्यूशन इक्वेशंस क्या है? the things, the processes, the function that evolve over the time, okay, over the time evolve हो रही होती हैं roughly. So फर्ज कर लें आपके पास एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और इसमें अगर कोई रैंडमनेस नहीं है तो मैं कहूंगा ये डिटर्मिनिस्टिक एवोल्यूशन इक्वेशन है. दिस इज इनिशियल कंडीशन एक्चुअली, ठीक है. स्टोकास्टिक एवोल्यूशन में क्या होगा? दैट कि आपका पार्टिकल है, it's like changing its position, energy, whatever the u means, ठीक है, in time. मगर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल दो चीजें हैं, एक फोर्सिंग फैक्टर which is deterministic और फिर randomness, noise basically. Then I'm going to say that's a stochastic differential equation, a stochastic evolution equation subjected to initial condition basically.
इसकी मिसालें क्या है? फॉर एग्जांपल स्टोकास्टिक किनेमैटिक्स बेसिकली। देखें, आप जरा खुद सोचिए, जब आप एक बाइक लेकर जाते हैं फॉर एग्जांपल मार्केट से कोई चीज खरीदने के लिए, डू यू रियली फील दैट कि आप बड़ा स्मूथली एक जगह से और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, या आपका मोशन जो होता है वो स्मूथ होता है? आपका मोशन बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता। समटाइम्स यू स्टॉप, आगे एक रक्षा आ गया और गाड़ी आ गई, कभी जी बंदा आ गया, फिर आप रुक जाते हैं, फिर जगह खाली है, फिर आप तेज हो जाते हैं, ठीक है, so on and so forth, ठीक। So your motion is never a deterministic kind of a motion. Could have an average speed, यानी एक एवरेज स्पीड हो सकती है कि जैसे मैं इस स्पीड से फॉर एग्जांपल एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक पहुंचा, ठीक है, but वो average is basically an exaggeration basically, ठीक है। आपका जो असल मोशन है, आपकी जो वेलोसिटीज हैं, वो एक रैंडम ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल स्टोकास्टिक किनेमैटिक्स में vt अगर वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, एक पार्टिकल की, और m जो है वो एवरेज फॉर एग्जांपल स्पीड है, तो फिर it's kind of mean reverting equation basically, ठीक है। This part is really the randomness, ठीक है, that's Brownian motion. I'm going to talk in a moment about precisely that, what you mean by Brownian motion basically, ठीक है। So usually जब आप मॉडल कर रहे होते हैं तो you don't incorporate a randomness, आप randomness को इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। आप अज्यूम करते हैं बड़ा स्मूथली आप एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक पहुंचे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट करते हैं नॉइजी पेंडुलम, यानी आप जब फॉर एग्जांपल पेंडुलम का मॉडल अज्यूम कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा यू हैव फॉर एग्जांपल सम सोर्स, उससे स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से एक बॉब है और बॉब वो मूव कर रहा है, ठीक है, डिटरमिनिस्टिक, ठीक है, दैट कि उसकी इक्वेशन क्या होती है, यू कैन सॉल्व इट एंड you can make predictions about, say for example, the angles between bob and its stress position basically, ठीक है। but imagine करेंगे अब जो है वो bob जिस सोर्स से, या वो जिस स्ट्रिंग जिस सोर्स से अटैच्ड है वो जिगल कर रहा है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल योर पेंडुलम इज नो मोर गोइंग टू बी a nice smooth pendulum, for example, be a noisy pendulum actually, ठीक है। For example, अगर आप stochastic quantization consider करते हैं free Euclidean field में एक particle की, तो it follows similar kind of different stochastic differential equations basically, ठीक है। So you can take differential equations, ठीक है, आप पुराने मॉडल्स अपने सारे ले सकते हैं, you can introduce some kind of randomness into it. इंट्रोड्यूसिंग रैंडमनेस से मुराद है कि आप जरूर गहराई से जरा सोचिए, कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं, जिन्हें आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हकीकतन वो रैंडम है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, रादर देन अटैकिंग डिटरमिनिस्टिक इक्वेशंस, यू कैन अटैक स्टोकास्टिक इक्वेशंस बेसिकली, ठीक है। सो दीस आर सम एग्जांपल्स ऑफ। जी जी, एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, ये सारी जो श्योर इक्वेशंस आपने लिखी हैं ये सारे फंक्शंस हैं, राइट? जी 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 जी। तो इसका मतलब यहाँ जो रैंडमनेस है वो फंक्शन की शक्ल में होगी, दैट्स व्हाई यू कैन ऐड अ फंक्शन टू अ फंक्शन, राइट? जी 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 जी, वो उसे फंक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम एंड नॉइस बेसिकली। सो फॉर एग्जांपल यहाँ जो है v इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड द रैंडमनेस, ब्राउनियन मोशन बेसिकली, यस। बगैर ये जो फंक्शन है ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, इट कैन हैव लॉट्स ऑफ पॉसिबल ट्रेजेक्टरीज, यानी एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अगर आप एक बाइसिकल पर बैठकर आप एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक जा रहे हैं, तो कोई पाथ फिक्स्ड नहीं है, यानी यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैजेक्टरीज फॉर द वेलोसिटीज बेसिकली, ठीक है। उनमें से कुछ प्रोबेबल होंगी, कुछ इम्प्रोबेबल होंगी, बट यू कांट से दैट इट्स अ फिक्स्ड ट्रैजेक्टरीज। मेरा पॉइंट असल में ये है कि आपने जब एग्जांपल दिखाई थी तो उसमें वो जो लैरी ग्राफ थे डिसकंटिन्यूअस थे, वो कंटिन्यूअस नहीं थे, तो एक डिसकंटिन्यूटी फंक्शन में तो इंट्रोड्यूस नहीं होगी ना, फंक्शन में एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को आप यहाँ पे वेलोसिटी जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन के तौर पे लेते हैं, ऑब्वियसली सो जरूरी नहीं है कि तमाम किस्म के रैंडमनेस जो है वो फॉर एग्जांपल तमाम किस्म के मॉडल्स में इंट्रोड्यूस किए जाएं। हम देखेंगे कि रैंडमनेस किस किस्म का है और फिर उस किस्म की रैंडमनेस हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी इक्वेशन में,
ठीक है। बाज रैंडमनेस ऐसी होती है बाकायदा तौर पर कि जिनके लिए द बेस्ट मॉडल इज द लेवी मॉडल बेसिकली, ठीक है। बाज के लिए फॉर एग्जांपल स्पिन ग्लास की जब हम बात करेंगे तो आई डोंट नो वेदर द कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स वालों ने सोचा है नहीं सोचा, आई एम श्योर कि उन्होंने जरूर सोचा होगा कि जी फ्रैक्शनल ब्राउनियन मोशन कुड बी अ वेरी गुड मॉडल फॉर देम एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज़ इट हैज अ मेमोरी, और वो मेमोरी जो है they want memory in their models actually. Anyway, we're going to talk about it in a moment, ठीक है जी। So now let's move towards central limit theorem. Central limit theorem की तरफ बात करते हैं quickly, और फिर उसकी बुनियाद पर मैं एक छोटी सी चीज करूंगा। So yes, okay, so here it is. फर्क कर लें, I hope that some of you already have seen Galton board. Galton board एक triangular structure है जिसमें pegs हैं different, ठीक है, ये समझ लें physical pegs हैं, जो कि आपने एक triangular shape में जो है, इसमें लकड़ी के टुकड़े हैं जो कि आपने लगाए हैं एक triangular shapes में, और नीचे समझ लें baskets हैं basically, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्ज कर लें if I am running a simulation, एक बॉल है जो कि मैं इस सिस्टम में अगर इंट्रोड्यूस करता हूं तो ये बॉल एक रैंडम ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए इनमें से किसी न किसी बॉक्स में जाकर फॉल करेगा, ठीक है। अब अगर आप ढेर सारे लें व्हाट यू कॉल बॉल्स और वो इंट्रोड्यूस करें इस सिस्टम में, तो what will happen is that you will always get a pattern actually, ठीक है, and that pattern is that कि ये जो collection of balls हैं, they will be always, they have a Gaussian distribution basically, they'll always make something that close to a bell curve, ठीक है, they'll always what do you call make a bell curve actually. In other words, अगर आप roughly, very roughly, if you put together lots of random things at a place, they will always make what you call this nice sweet what you call bell shape actually, ठीक है। तकरीबन इसी के लगभग जो है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी कह रहा होता है। You can restart it, you can always see that कि this will repeat actually, हमेशा ऐसा जरूर होगा, so always this will happen basically, ठीक है। You will always get kind of a bell curve actually, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, it's not a miracle basically, you can see that के यहाँ बॉल्स क्यों कम गिर रही हैं, इसलिए क्योंकि एक बॉल जब फॉर एग्जांपल एक पैक को हिट करती है तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वो लेफ्ट को मूव करेगी या तो वो राइट को मूव करेगी, ठीक है। अब इस बॉक्स में बॉल्स के गिरने के लिए एक बॉल को सारे के सारे से फॉर एग्जांपल लेफ्ट मूव्स करने पड़ेंगे, ठीक है। And that's highly unlikely that एक बॉल जो है वो सारे के सारे लेफ्ट मूव्स करते, it's probable but unlikely as well actually, ठीक है जी। जबकि जो बीच वाली ट्रेजेक्टरीज हैं, पाथ्स हैं, they have this what do you call they are the more probable paths than these extreme paths, ठीक है जी। So that's really roughly the central limit theorem, that you take you collect random things at a place basically, roughly, very roughly, that's not precise, ठीक है। They will be always collected in a in a nice Gaussian what do you call shape actually, ठीक है। और मैं इस ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करूंगा to talk about तो इसमें जावेद भाई ये भी मेरा ख्याल लाजमी है कि जितना ज्यादा आपके पार्टिकल्स की तादाद बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा सेंट्रल लिमिट की तरफ, for sure अगर आपके पार्टिकल्स कम हैं, इमर्स बहुत थोड़े हैं, तो फिर ये लाजमी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं होगा। यू कैन टिल्ट इट, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर जाकर और अगर इन प्रोबेबिलिटीज के साथ खेलूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है आई एम अज्यूमिंग एक्चुअली दैट के जी लेफ्ट और राइट मूव्स जो हैं दे आर इक्वली लाइकली। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो फिर वो बेल शेप नहीं बनेगी। सो you have some assumptions basically in this central limit theorem basically, that you should have a sequence of IIDs actually, okay? And then you compute their averages, and their averages
sample averages basically converge to what you call a normally distributed random variable actually. ठीक है, roughly. ठीक है. So that's what the central limit theorem is. You put together lots of random things, sum them together, their distribution, इनकी individual distribution क्या है, it doesn't matter. यानी हर पार्टिकल किस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ पहुंचता है इन बॉक्सेस तक, इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज बेसिकली दैट कि इनका जो सम होगा, यू नो, लाइक इनका जो कलेक्शन होगा, ठीक है, वो हमेशा एक बेल कर्व बनाएगा. बिल्कुल. मैं यहाँ पे टेम्परेचर की मिसाल देना चाहूंगा जी जी फिजिक्स जी के हवाले से. कि जब जी आप कहते हैं कि जी कमरे का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई कमरे का एक पार्टिकल है जो कि हाँ, इस टेम्परेचर बिल्कुल के ऊपर है. वो एक एवरेज क्वांटिटी है कि जितने भी सही. पार्टिकल्स एक कमरे के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे कन्वर्ज कर रहे हैं ऑन द एवरेज टुवर्ड्स 30. तो ये उस तरह की एक सही है. सही सही. चले जी. So what I want to do now is really to basically talk quickly about, मैं एक नोशन है जैसे ब्राउनिन मोशन की, उसे मैं थोड़ा सा रिग्रेस बनाना चाहता हूँ. फर्ज कर लें कि आप एक बैटिंग गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कि जिसमें आप अगर वो बैट जीत जाते हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, सो यू आर टॉसिंग कॉइन, ठीक है, टिपिकल एग्जांपल. यदि अगर आप वो गेम विन कर लेते हैं तो यू विल गेट $1, ठीक है. और if you for example lose that particular game, you lose $1 actually, ठीक है. आप फर्ज कर दें आपके विन करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और लूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, ठीक है. और फर्ज कर दें कि आप ढेर सारी गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है. फर्ज कर दें XI रिप्रेजेंट करता है ith गेम को, ठीक है, बार बार ये गेम खेल रहे हैं, ठीक है. और फर्ज कर लें YN रिप्रेजेंट करता है वो पैसे, वो वेल्थ जो कि आपने क्यूमुलेट की है आफ्टर व्हाट डू यू कॉल एन गेम्स एक्चुअली, ठीक है. यानी x1 जो है ये आउटकम है बैटिंग गेम का, जो कि +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, ठीक है. और x2 आउटकम है गेम दूसरे बार कॉइन टॉस करने के बाद जो यू नो जो आप डॉलर लूज कर रहे हैं या विन कर रहे हैं उसका, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये एन गेम्स की वेल्थ है जो कि आपने क्यूमुलेट की है इस क्वांटिटी YN में बेसिकली, ठीक है. अब मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, आई वांट टू सी द प्लॉट्स ऑफ द पोटेंशियल प्लॉट्स फॉर द YN एक्चुअली, ठीक है. सो फर्स्ट कर दें ये टाइम्स हैं, यहाँ दिस 1 2 3 4 5 6 1 so forth, ठीक है. याद रखें कि ये Y जो है ये गेन्स है, ठीक है, these are the gains. अच्छा जी. इनिशियली यू नो आपके गेन्स क्या होंगे जब आपने फॉर एग्जांपल कोई गेम नहीं खेली, तो मैं कहूंगा कि जी आई हैव नो गेम्स एक्चुअली, ठीक है. सो इट्स टाइम वर्सेस YN ग्राफ, ठीक है. अच्छा, एक गेम खेली तो फिर आप क्या हो सकता है जी, फर्ज कर लें आप जी हमजा भाई, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू ऐड समथिंग. जी हमजा भाई, यू वांट टू से समथिंग. हमजा हमजा ने हैंड रेज किया तो मेरा ख्याल जी नहीं जी है. जी, चले ठीक है. ओके, सो जी जब आपने कोई गेम नहीं खेली तो आपके गेम्स 0 हैं. जब आपने गेम एक खेली है तो आपके जो गेम्स होगा पहली गेम के बाद आपके गेम्स क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने डॉलर लूज किया हो तो आपका गेम -1 होगा, और फिर अगली गेम अगर आपने जीती तो जी आपका गेम 0 हो जाएगा, और फॉर एग्जांपल उसके बाद अगली गेम आपने जीती तो फिर आपका गेम क्या हो जाएगा, यू कॉल say for example 2 हो जाएगा, and so on and so forth, ठीक है. So you're gonna have random dots basically placed, ठीक है. तो मैं एक ट्रेजेक्टरी बना सकता हूँ आपके गेन्स की. This would be kind of the trajectory of the gains, that how your gains are changing while you are playing the game, ठीक है. I can talk about for example what do you call what would be my average gains, ठीक है भाई.
Now want to say mathematicians, हम expectation को यूं लिखते हैं, average को यूं लिखते हैं, ठीक है? Physics वाले जो है ना, they prefer to write averages in this way. So what would be my average gains? My average gains is going to be the average of these xi's, ठीक है? मगर हर xi की average क्या है? In other words, एक गेम में आप क्या गेन करेंगे वो क्या एवरेज है? So it's 1 times 1/2 plus 1 times say minus 1/2, 1/2 times a -1. So average gain is going to be 0. So in other words, that each one of this average is 0. So average gain आपकी 0 है, ठीक है? So you can check कि जो variance होगी, say for example for an increment, कि जी gains from game M to in particular अगर मैं कहूँ कि जी छठी गेम से लेकर और 10वीं गेम्स तक की वेरिएंस क्या होगी, तो मैं कहूंगा जी really represents the number of games that you are playing actually, ठीक है? फॉर एग्जांपल छठी गेम से लेकर 10वीं गेम तक आपने गेम्स जो खेली हैं उनकी तादाद कितनी है? 4। तो 4 गेम्स में आप क्या जीत सकते हैं? या तो $4 जीत सकते हैं एट बेस्ट, या $4 लूज कर सकते हैं एट वर्स्ट. सो दिस वुड बी रियली द वेरिएंस ऑफ द गेम, ठीक है जी? सो और फिर इस सम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? इफ यू प्ले द इनफ गेम्स, ठीक है, इफ यू टेक दिस n to infinity, तो अभी हमने देखा वी हैव व्हाट यू कॉल समथिंग कॉल्ड द क्वांटम लिमिट थ्योरम, दैट के जी दिस yn is going to be really normally distributed basically, ठीक है, with mean 0 and variance n actually, ठीक है? So what's Brownian motion? अब मैं इस ग्राफ को क्विकली, अब मैं कहता हूं कि यही you know what you call game खेलिए, but let's play this game now you know really instantaneously. फर्ज कर लें कि आप गेम खेल रहे हैं, like you are doing this betting game, but you are doing it what do you call इंस्टेंटेनियस, हर नैनो सेकंड में आप ये गेम खेल रहे हैं. तो फिर क्या होगा? हर नैनो सेकंड में आपके जो गेन्स हैं, दे आर गोइंग टू गो अप एंड डाउन बेसिकली, ठीक है? सो इन अदर वर्ड्स, if you consider the limiting case of this process, you know, as n goes to infinity, ठीक है, then the process that you're going to get is something called the Brownian motion. ये Brownian motion है, ठीक है? I should write it first. Brownian motion, ठीक है? ठीक है? So roughly Brownian motion can be thought as what do you call the limit of the random walk, very roughly, ठीक है? Nothing is rigorous here actually, ठीक है? I hope you got some sense. जी, किसी ने रेज किया है हैंड, तो आप अगर बात करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, जरूर. ब्राउनियन मोशन को एक हम जो जानते हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, कि जी फर्ज कर लें यू हैव दीज वाटर पार्टिकल्स, ठीक है जी, और रॉबर्ट ब्राउन साहब ने ये जो है ये ऑब्जर्व किया कि जी जब मैं यू नो इस पानी में इन वाटर पार्टिकल्स में पोलेंस इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो ऑब्वियसली दीज पोलेंस आर गोइंग टू गो डाउन, दे आर गोना फॉल इनटू द बॉटम, ठीक है? मगर मजे की बात ये है कि ये जो पोलेंस हैं, दे आर नॉट just smoothly coming down, they are you know randomly coming down actually, and he couldn't understand that कि ये randomly क्यों नीचे जा रहे हैं. ये तो समझ आ रही है कि नीचे क्यों जा रहे हैं because there is gravity, मगर ये randomly क्यों जा रहे हैं, ठीक है? so in 1905 अपने आइंस्टाइन ने अपने मिरेकल ईयर में जो उसके 5 मशहूर पेपर्स हैं, एक पेपर जो है उनमें से एक पेपर जो है, he kind of explained this phenomena of Brownian motion, he made it rigorous basically, ठीक है? और ये इसकी काइंड ऑफ एक बहुत रफ सी डिपिक्शन है. इसमें कोई सवाल है तो जरूर पूछें, ठीक है? चले जी, कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं. अच्छा, एक चीज जो कि मैं जरूर बताना चाहूंगा कि भाई कैसे, जो कि थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था शहबाज भाई ने भी, ठीक है? व्हाट मेक्स फॉर एग्जांपल such a process is different from, for example, such functions actually. जो fundamental difference है वो ये है, यानी अगर मैं कहूँ कि
न्यूटन की जो डीपेस्ट इंसाइट थी वो क्या थी कि जी फर्ज कर ले मैं एक फंक्शन को समझना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आई वांट टू अंडरस्टैंड इट फॉर एग्जांपल हियर एक्चुअली, या एक छोटे से इंटरवल में मैं ऐसे देखना चाहता हूँ. सो व्हेन यू गोना सी दिस कर्व फॉर एग्जांपल लोकली, अच्छा यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ इस कर्व को तो लाइक ओके इस वक्त इसका जो ग्राफ है इट्स बिटवीन -8 सो फॉर एग्जांपल 10 पर ग्राफ प्लॉटेड है. बट अगर एक छोटे से इंटरवल पर अराउंड 2 मैं इस ग्राफ को देखता हूं तो हाउ डज इट गोइंग टू लुक लाइक. सो एज यू जूम इन, और जूम इन का प्रिसाइज मतलब क्या है, जूम इन का मतलब है कि जी आप उसे छोटे से छोटी डोमेन पर देखिए तो फिर यू कैन सी एक्चुअली दैट कि ये जो ग्राफ है जो कि कर्व था अब इट्स नो मोर कर्व एक्चुअली, ठीक है, इट्स फ्लैट. और फिर अगर जो भी आप समझना चाहते हैं कर्व के बारे में, ठीक है, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं कर्व के बारे में, आप वही सवाल इस लाइन की मदद से पूछ सकते हैं. In other words, try to fit a line that matches with the curve in say such a small interval. And whatever question that you want to ask about, for example, the curve, you can ask it or understand it through the line actually. ठीक है, वो fancy language में कहते हैं जी, the lines are one manifolds actually. They locally looks like Euclidean, what do you call, spaces actually. ठीक है, that was really deep insight. इन प्रोसेसेस के साथ मसला ये है कि भाई फर्ज कर लें यू हैव दिस व्हाट डू यू कॉल रैंडम प्रोसेस, ठीक है, एंड यू जूम इन. ये प्रोसेस है फॉर एग्जांपल 0 से 25 टाइम तक, ठीक है, ब्राउनियन मोशन है रफली 0 से 25 टाइम तक. आप इसे देखें अगर, और फिर आप इसके एक छोटे से हिस्से को देखें एंड यू जूम इन, यू विल सी दैट इट वुड स्टिल लुक लाइक the original graph actually. If not original graph, it would be still random thing. तो इसका मतलब ये है कि इनको समझने के लिए, यानी इन प्रोसेसेस को समझने के लिए आप कैलकुलस इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी जो आपने न्यूटोनियन कैलकुलस पढ़ा है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते. यू नीड सम न्यू काइंड ऑफ कैलकुलस बेसिकली, यू नीड सम न्यू ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड दैम. ठीक है, कि लाइक दीज रैंडम ट्रेजेक्टरीज हैव सच अ फ्रैक्टल बिहेवियर बेसिकली. ठीक है, सो इट्स ब्राउनियन मोशन इज बेसिकली अ फ्रैक्टल एक्चुअली. ठीक है, कि आप जितना मर्जी चाहे जूम कर लें, जितना मर्जी चाहे छोटे इंटरवल पर देखें, यू कांट गेट रिड ऑफ रैंडमनेस, इट वुड बी ऑलवेज देयर एक्चुअली. ठीक है, सो इट्स नॉट अ मैनिफोल्ड इन यूक्लिडियन सेंस एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व है. Are you getting the point? ठीक है जी, so that's what makes for example randomness different from actually. So ठीक है जी, so I hope कि हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात कर दी, ब्राउनियन मोशन हमने समझ लिया थोड़ा सा कि भाई ओके यू हैव अ रैंडम वॉक एंड इफ यू कंसीडर द रैंडम वॉक, ठीक है, या उसका लिमिटिंग प्रोसेस कंसीडर करें तो यू गेट अ प्रोसेस जिसे आप ब्राउनियन मोशन कह सकते हैं. इसकी प्रिसाइज डेफिनेशंस हैं, देयर इज अ एंटायर ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, उसकी डिटेल्स में जा सकता है, बट आई डोंट हैव टाइम फॉर इट. की प्रॉपर्टी क्या है फॉर एग्जांपल ब्राउनियन मोशन की, इट हैज क्वाड्रेटिक वेरिएंसेस एक्चुअली. ठीक है, सादा सी जुबान में अगर मैं कहूं कि अगर मैं एक छोटी सी इंक्रीमेंट लेता हूं ब्राउनियन मोशन की, ब्राउनियन मोशन को हमेशा मैं WT से डिनोट करूंगा. ठीक है, सो इट्स अ वीनर प्रोसेस एक्चुअली. वीनर प्रोसेस का है ब्राउनियन मोशन का. टिपिकली जो नोटेशन इस्तेमाल होती है ब्राउनियन मोशन के लिए वो WT इस्तेमाल होती है. DWT को अगर मैं इंटरप्रेट करूं कि ये छोटी सी इंक्रीमेंट है ब्राउनियन मोशन की, तो इसका जो स्क्वायर है इट वुड बी बेसिकली DT. ठीक है, सो that's what really roughly means the quadratic variations actually. ठीक है, but okay, it has a detailed meaning as well, not getting into it, but that's a key property of for example Brownian motion. ठीक है जी, अब फर्ज कर लें I want to compute the dynamics. फर्ज कर लें एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है जो के फॉलो कर रहा है एक ब्राउनियन पाथ एक्चुअली. अब एक क्वांटिटी है जो कि मैं कंप्यूट करना चाहता हूं, f एक क्वांटिटी है. ठीक है, f एक फंक्शन है which is a function of Brownian motion, something that depends on Brownian motion, उसके dynamics compute करना चाहता हूं. So how can I compute it? So for example, the simplest way is that okay, you consider say you take the df of x, and df of x can be very simply written in terms of Taylor series. ठीक है, you can write it in this manner. और x को अगर आप replace कर दें for example WT से, तो you get
the dynamics of the function of the Brownian motion basically can be roughly written in such a form actually. ठीक है, और इस फॉर्मूले को, इस आइडिया को you call it Ito lemma. Obviously यहाँ dwt का स्क्वायर, because अगर आप x को wt से रिप्लेस करते हैं तो you're gonna get dx square यानी dwt square, but you know dwt square is dt, so you can, so the dynamics of the function of Brownian motion can be written, for example, in such a way actually. छोटी सी मिसाल देखते हैं, ये फर्ज कर लें एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो wt का स्क्वायर है, in other words that it follows some random trajectory, ठीक है, Brownian motion. और जी मैं और I know that कि kinetic energy is a function of velocity, ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि अच्छा, you know, how would the kinetic energy change over the time actually? How can I know it? So जी kinetic energy क्या होती है? Roughly it's 1/2 mv square, ठीक है। तो अगर आप डायनामिक्स कंप्यूट करना चाहते हैं किनेटिक एनर्जी के, ठीक है, तो आपको डायनामिक्स कंप्यूट करने पड़ेंगे किसके? wt power 4 के, because if the vt is wt square substituted is the dynamics of wt power 4. Now what would be the dynamics of wt power 4? ये मैं कैसे कंप्यूट कर सकता हूँ? So I can compute it through this simple version of Ito lemma basically, that कि जी अच्छा आप f of x ले लें which is x square, ठीक है, और उसका अगर डेरिवेट करें एक बार और wt सब्स्टिट्यूट करें तो it would be what 1/4 w3t cube प्लस, और दो बार डेरिवेट करें 1/2 से मल्टीप्लाई करें और wt सब्स्टिट्यूट करें तो you're going to get 3/8 wt का स्क्वायर, ठीक है। So in other words that अगर वेलोसिटी आपके फेवरेट पार्टिकल की, फेवरेट ऑब्जेक्ट की, फेवरेट व्हीकल की वो एक random path है, तो you can say for example compute dynamics of kinetic energy, and you can redo all kind of calculations that you have been doing in your, for example, classical mechanics, in your, say for example, physics courses, and you can redo them in the terms of what you call Brownian motion and stochastic calculus actually, ठीक है। I know I'm throwing lots of things, I know I am throwing lots of things, but I mean आप सवाल पूछ सकते हैं। I just wanted to give you a flavor actually, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी जो है just show you the light actually कि इतना मुश्किल नहीं है ये सारा मैथमेटिक्स जो है वो सीखना। चलिए, so I want to now move towards a territory, ठीक है, for which I would say that कि जी I know nothing, or I have no shame in admitting my utter ignorance in physics basically, that मेरी descriptions जो कि आगे, for example I'm going to give you for example about Nobel Prize, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा precise ना हो, because I'm not used to a culture of, say for example the language physicists use, हमारा mathematicians का अपना culture है to say things out. So I'll try my best कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से चीज़ें ना कहूँ, जो मैं समझ पाया हूँ चीज़ें ओरिजिनल सोर्सेस से वो मैं अटर करूँ, वो मैं कहूँ, ठीक है जी। तो दो बेसिक सोर्सेज हैं। जी 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 हाँ, ये चैट में सवाल है फतेह खलील का। जी 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 श्योर। What if the process is other than Brownian? Will we use same version or different? नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, असल चीज यही है, ये बिल्कुल ऐसे ही, आप डांस वाली मिसाल समझिए, यानी आपके सामने एक शख्स है जो कि डांस कर रहा है, and now you have to judge what kind of dance this guy is doing. Is it doing a folk dance? Is it doing, say for example, hip hop dance, which is random? But is it doing a robotic dance, for example, which is also random but different from hip hop? ठीक है, so बिल्कुल इसी तरीके से, I mean you have to think that कि जी आप जिस रैंडम चीज को, जिस जिन डायनामिक्स को आप मॉडल करना चाहते हैं, what kind of randomness fits into that particular, for example, thing actually, ठीक है। जैसे कि स्पिन ग्लासेस के लिए I think that जो कि मेरी assessment है, the fractional Brownian motion would be a very good model. I don't know, I'm sure that लोगों ने पहले सोच रखा होगा, basically spin glasses में जो for example randomness emerge कर रही है,
that can be modeled through fractional Brownian motion, which is different from Brownian motion basically. ठीक है. So randomness सब एक किस्म की नहीं है, different किस्म की है, और randomness की किस्में सीखनी पड़ेंगी, और फिर ये देखना पड़ेगा कि जी कैसे जिन चीजों को आप समझना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, एक पार्टिकल है, एक कोई क्वांटिटी है, एक एनर्जी है, और वो फ्लक्चुएट कर रही है, तो वो किस तरह फ्लक्चुएट करी, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है. Then we'll try to fit what you call a kind of randomness, or kind of process to basically that fluctuations basically, ठीक है. So इसमें अब तक कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिए. वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने लिखा है Ito's lemma, ये सिर्फ ब्राउनियन मोशन के लिए है या नहीं, it's generic actually. You can write it for Brownian motion for jumps. ये भी एक बहुत dumbed down version है Ito lemma का. There's a entire theory basically based on it, ठीक है. So you can have Ito lemma for Brownian motion, you can have Ito lemma for martingales, you can have Ito lemma for Brownian motion with jumps, you have Ito lemma for Levy processes. तो जितने भी randomnesses हैं उनके लिए Ito lemma जरूर होता है. यानी Ito lemma के सिवा stochastic calculus में गुजारा नहीं है, क्योंकि आप कैसे डायनामिक्स, यानी फर्ज कर ले एक क्वांटिटी है जो रैंडम है, और फिर उस पर एक दूसरी क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है, तो अब वो जो दूसरी क्वांटिटी है उसके डायनामिक्स आप कैसे कंप्यूट करेंगे जब तक आपके पास Ito lemma ना हो. सो Ito lemma exists for all kind of randomnesses, well known randomnesses, fractional Brownian motion हो, Levy processes हो, anything. ठीक है. ज़ैनब पूछ रही हैं कि ये जो लेमा आपने लिखा था इसमें आपने वो क्वाड्रेटिक वेरिएंस इस्तेमाल की है. जी, ये क्वाड्रेटिक वेरिएंस आपने लिखी थी की प्रॉपर्टी ऑफ ब्राउनियन मोशन, राइट? जी. तो अगर ब्राउनियन मोशन नहीं होगी, कोई और तरह की रैंडमनेस होगी, तो क्वाड्रेटिक वेरिएंस नहीं होगी, तो फिर ये लेमा चेंज होना चाहिए. फिर एग्जैक्टली तब्दील होगा, ठीक है. तो ये सो दिस लेमा इज स्ट्रिक्टली ट्रू फॉर ओनली ब्राउनियन मोशन. इसके अलावा अगर रैंडमनेस है तो यू नीड अ डिफरेंट लेमा. ओके. धर्मेंद्र कुमार, आपका सवाल है, आप पूछ लें. जी धर्मेंद्र. सर am I audible? जी धर्मेंद्र. सर ये पूछना था कि जो ब्राउनियन मोशन से रिलेटेड है, अगर ये ब्राउनियन मोशन, ये जो रैंडम वॉक कन्वर्ज कर रही है ब्राउनियन मोशन को, ये हाउ फास्ट, ये किस तरह से हम मेजर करें, हाउ फास्ट? Exactly. You have different estimates for rate of convergence basically. ठीक है. You have different estimates for rate of convergence. ये convergence basically असल में convergence in probability है, ठीक है. And you can compute what you call the rate of convergence of it. फिर ये पूरा अलग से topic है, ठीक है. Anyway, so let's क्योंकि वो कंप्यूटर में जो rate of convergence होती है, obviously this is going to be an important complexity thing. Exactly. And you want your algorithm, ऐसा तो नहीं है कि जो for example you have a convergence like okay you have this convergence, but this not I shouldn't say it. So you can have a blow up in finite time actually, ठीक है. या convergence जो है you can have a very slow convergence. या some algorithms can be computationally complex, obviously some are less complex, ठीक है. मगर obviously यहाँ हम interested जो है वो rate of convergence में नहीं है. ये है कि हम सिर्फ एक छोटा सा introduction दे दें. ठीक है. चलिए. So let's move ahead to the Nobel Prize 2021. The Nobel Prize 2000, as I said that I can say junk things, so ignore them. वो सब गलतियां मेरी तरफ से होंगी. I'll try my best कि मैं कोशिश करूं कि precise तरीके से डिस्क्रिप्शन दूं. अच्छा, एक चीज दूसरी जो कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं तो उम्मीद है कि जब आप ये ओरिजिनल पेपर पढ़ेंगे साइंटिफिक जो कि नोबेल प्राइज
का जो पेपर है जिसमें वो डिस्क्रिप्शंस है, you can read it actually, that would be readable for you. Anyway, so जी नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया 2021 का for ground breaking contribution to our understanding of complex physical systems. मैं बात करूंगा क्विकली what do you mean by complex physical systems, ठीक है। 3 लोगों को मिला, मनाबे, हसलमैन, परेसी, ठीक है। हसलमैन और मनाबे को 1/2 what do you call नोबेल प्राइज मिला, और फिर बाकी हाफ जो है वो परेसी को मिला, ठीक है। when I was thinking that कि जो परेसी जो है इनका क्या लिंक है say for example हसलमैन के साथ, but then later on I realized that there is a deep connection basically, because apparently in मनाबे और हसलमैन का काम बहुत डिफरेंट है from परेसी, but इनके दरमियान जो कॉमनैलिटी है वो कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम्स है बेसिकली। एनीवे, मनाबे और हैसलमैन को जो नोबेल प्राइज मिला फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, इन्होंने जो प्रेडिक्शंस की वो प्रेडिक्शंस टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी स्पॉट ऑन बेसिकली, ठीक है। सो आई एम गोना गो इन अ मिनट अबाउट इट। और Parisi, turns, as per my assessment, like he was kind of a, like he's a math gem basically, that he created some of mathematics roughly के जो के उन states of matters को study कर सकते हैं जिनको typically usually study करना बहुत मुश्किल है। Anyway, for the discovery of interplay between the disorder and fluctuations basically, ठीक है। fluctuations का लफ्ज जब भी हो आए तो इसका मतलब होता है randomness over the time, randomness that evolves over the time. That's what roughly fluctuations mean actually, ठीक है जी। So let's get into first say Manabe and Hasselmann's contribution basically. See, the greenhouse effect we all know was greenhouse effect. एक अदद सूरज है हमारे solar system में है, हम like that's our earth. We have what do you call it, atmosphere around it. So यहाँ से radiations आती हैं सूरज से, ठीक है। short wave radiations clear atmosphere से गुजरती हुई जमीन तक पहुंचती हैं। Obviously जमीन इसके नतीजे में हीट अप होती है, ठीक है। बाज़ रेडिएशंस जो हैं वो जमीन एब्जॉर्ब कर देती है, बाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होने के बैक होने के बाद बाज़ रेडिएशंस हैं जो कि what do you call, they get back again basically to the earth, and बाज़ they cross through what do you call atmosphere actually, ठीक है जी। So shortwave radiations जो हैं they penetrate Earth atmosphere. Shortwave radiation reflect होती हैं from Earth, as well as long wave radiation. Long wave radiations are absorbed by greenhouse gases. Basically ये जो atmosphere है, it's like it comprises of different kind of gases, carbon dioxide, nitrogen monoxide, methane, ozone. We all know that कि भाई ये जो 3 gases हैं especially ये हम industrial level पर produce कर रहे हैं, और नतीजा ये हो रहा है कि ये जो layer है atmospheric, it's getting more and more thicker, और heat जब enter हो रही है, radiations जब enter हो रही हैं, तो वो basically roughly if I say is that what is happening is that they are trapped basically in this environment. They hit back again and again to the earth, जिसके नतीजे में जो है average earth का temperature वो increase हो रहा है. So that's really a greenhouse effect. Probably you guys know more better than me actually, ठीक है। 1750 से अब तक जितना हम say for example climate तब्दील कर चुके हैं around earth, वो you can compare it to the last 5,000 years, what do you call climate actually. So we are messing up with what do you call the climate of the place that we are living in, ठीक है जी। So more precisely we have what do you call energy balance models, ठीक है। So let's first compute what you call the bare temperature. जी फर्ज कर लें अगर इस जमीन के गिर्द ये एटमॉस्फेयर ना होता तो फिर क्या क्लाइमेट होता of say of the earth actually, ठीक है। So what we should have expect, so temperature without atmosphere, ठीक है।
तो जी इसको समझने के लिए we have to balance out the energy fluxes that are coming in and the energy fluxes that are coming out basically. So and by energy flux I mean the energy per unit, per time and per area, actually energy per time per area. Okay, so energy flux N can be written in this manner. S naught is the solar constant. ये solar constant है, ये वो constant energy है in a unit amount of time that a square meter of the earth kind of receives. कुछ इसका part is basically reflected back by say clouds. कुछ इसका part जो है वो oceans absorb कर देते हैं, ठीक है. So alpha is the measure basically of what you call bond albedo. It has the value 0.03, ठीक है. और you know this really depends on that कि जी clouds कितना reflect back करते हैं radiations को और फिर oceans जो है वो कितना absorb कर रहे हैं you know radiations को basically, ठीक है. This 4 comes, this ये जो 4 है, this comes in because of basic 2 factors that can be, you know, when you are doing these calculations you do what do you call, एक तो आपकी earth is round, ठीक है. So you know when the earth is exposed to for example the sun, तो पूरी earth exposed नहीं है, but you know the some part of the earth is exposed and some part यानी बाज़ जगह दिन होता है बाज़ जगह रात होती है, ठीक है. We know that just because of what you call the earth. So 2 जो है is 2 is coming out of it, but another 2 is coming out of average basically. So when you're going to read that Nobel Prize document basically, तो वो वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं लिखने. Outward flux compute करने के लिए you can use what you call the Stephen-Boltzmann law, ठीक है. Sigma is the Stephen-Boltzmann constant और T temperature है. अब अगर हम ये assume करें कि कोई atmosphere नहीं है around Earth, तो energy flux in should be balanced out with the energy flux out. In other words, that के लिए आपको इन 2 expressions को what do you call equate करना पड़ेगा, और equate करने के बाद I can get the value of what do you call T actually, and that value of the T is going to be roughly this. आप इन दो को equate करें, 4th root लें, तो you're going to get such an expression. ठीक है जी. तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बेयर टेम्परेचर, ठीक है. which is you know if you substitute all these numbers it's going to be -18 centigrade actually, ठीक है. तो अगर ये atmospheric layer ना होती तो the earth would be a pretty messy place actually, ठीक है जी. Now we have atmosphere what do you call around earth, ठीक है. तो जी फर्ज कर लेते हैं कि हम एक लेयर assume करते हैं कि जी you know earth और sun के दरमियान एक layer of atmosphere है. So the radiations are coming in, ठीक है. So radiations are coming in, ठीक है, and then some radiations are absorbed by earth and rest are say for example reflected back to the atmosphere, और फिर वहां से कुछ radiations जो हैं they penetrate through what do you call atmosphere, and you know some radiations are what do you call reflected back, ठीक है. So the flux of the energy from the ground is the 2 times of because that's an assumption actually, but that's an assumption, you know, roughly कि जितनी radiations जो हैं वो जो flux है for example जितना atmosphere से penetrate कर रहा है energy का उतना ही जो है वो reflect back हो रहा है, ठीक है. So you can have this 2 times of FA which is same as the 2 times of flux in previous case. और फिर अगर आप यहाँ you know FG की value substitute करें, ठीक है, तो you can get a temperature from the ground basically, and that temperature is going to be what? It's going to be the 2 power 1/4 of the bare temperature, which is around 34 centigrade, you know, really a comfortable what do you call temperature जिसमें survive किया जा सकता है, ठीक है जी. So this is classical model, ठीक है. I know that I have done a lot of waving of hands, you know, I'm running out of time. I know that you know time काफी हो चुका है, so I'll just quickly browse through these calculations, ठीक है जी. और फर्ज कर लें अगर n layers हों तो you can easily drive a formula that कि जी temperature at the ground is going to be the you know 1 plus n power 1/4 of the bare temperature in the West without sphere वाले temperature से, ठीक है जी. मनाबे का contribution क्या था? मनाबे ने मॉडल कंसीडर किया इसी किस्म का
but he considered what you call a one-dimensional slice of the atmosphere, basically. Okay? Considered a one-dimensional vertical slice of the atmosphere. Okay? जिसमें दो बुनियादी चीजें थी. एक, obviously greenhouse gases, okay, were included, and or you call the atomic water, या ये कहें कि okay, so what should be the best way to say it? Air transport, or उनके model में air transport, or there was what do you call air transports involved, and the greenhouse gases, ये दो involved थी. ठीक है? When I looked into the original papers of it, so I found that like, they kind of implemented this kind of a model actually. ठीक है? Which is a nice one-dimensional PDE, basically. T temperature hai, so it's like it's changing over the time due to the difference of what do you call the flux in and flux out. वही जो कि थोड़ी देर पहले हमने देखा. So what they did is really they did a numerical solution of what do you call. अगर आप मनाबे का original paper देखें, so they did nothing. They just did they did a finite differences scheme of this model. They did simulations, और उसकी बुनियाद पर they did some predictions. ठीक है? Anyway, so they considered, just as I said, that they just considered the one-dimensional slice of atmosphere, जिसमें greenhouse gases और convection phenomena शामिल था. In other words, the air transport के hot air ऊपर जाती है और फिर cold air जो है बारिश की शक्ल में नीचे आती है. ठीक है जी? So they just implemented this. जो major contribution था, ठीक है, in his paper in 70s, they simulated this. ठीक है, कि अगर आप, so this is representing the temperature versus what do you call altitude in kilometers, basically. ठीक है, so what they predicted is basically this interesting part. आज से करीबन कोई 50 साल पहले समझ लें. ठीक है, that कि अगर आप जो कार्बन लेवल्स हैं उनकी इमिशंस को हाफ कर दें, ठीक है, तो जो एवरेज टेम्परेचर है या जो क्लाइमेट है उस पर करीबन 2.28 सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंस पड़ेगा, वो कम हो जाएगा. ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आप जो कार्बन इमिशन है उसे डबल कर दें, ठीक है, तो फिर जो इम्पैक्ट होगा ओवरऑल क्लाइमेट पर, द टेम्परेचर वुड इंक्रीज बाय 2.36 सेंटीग्रेड एक्चुअली. ठीक है, सो इट टर्न्स आउट दैट व्हाट दे प्रेडिक्टेड अराउंड को आज से को 50-60 साल पहले, ठीक है, इट टर्न्स आउट दैट कि जी so the predictions turns out to be true actually, that वाकई इतना जो है since we have kind of increased the emission level of carbon dioxide, so the temperature has it has increased around this predicted number basically. So this was a huge what do you call a leap in Manabe's work actually. So Manabe basically was a spot on in his prediction basically through computer simulation. Okay. Hussain ने क्या किया? Hussain basically tried to understand the relationship between weather and climate. We know that weather changes quickly over the weeks, over the months, while climate is something that slowly changes over the time actually. And what Hussain did was something interesting. उसकी जो एक deepest insight थी वो ये थी कि जी फर्ज कर लें that's just a simulation of Brownian motion actually. ठीक है, अब देखें यहाँ ये जो particles हैं they are moving quickly while this yellow particle, ठीक है, is moving kind of slowly as compared to these tiny particles basically. So what Hussain understood that कि अगर मैं for example assume कर लूं कि जो tiny particles हैं they are kind of representing temperature, ठीक है, और ये जो yellow the big spot है इसको मैं assume करूं as what you call climate actually. ठीक है, तो फिर ये climate क्यों change हो रहा है? इसलिए तब्दील हो रहा है because the temperature is fluctuating basically. ठीक है, so he saw the analogy of the relationship between temperature and climate with the Brownian motion, and that was a huge thing actually, and that allowed him to basically create an interesting kind of a model. ठीक है जी,
or pair, he kind of also saw really the human fingerprints on CO2 level rise in or CO2 levels का effect on climate basically. ठीक है. So अगर आप document देखें Nobel Prize वाला, so rapid evolution of weather, like you can model it by some kind of differential equation, ठीक है, where x is, we can say it's representing roughly temperature. In general, it was a vector basically, ठीक है, but यहाँ मैं ऐसे kind of a one-dimensional version इसका consider करता हूँ. So say for example, the temperature is following some evolution, and F is some forcing factor that's changing it, which depends on temperature, and Y is representing the climate basically, ठीक है. So evolution अगर आप temperature का लें, weather का लें, ठीक है, तो वो you can represent it through a differential equation. अगर आप evolution ले climate का, तो उसे भी आप represent कर सकते हैं as a differential equation. But this differential equation, but both differential equations are going to be really the stochastic differential equations basically. And he derived it very easily that कि अच्छा आप इस y dot में जो forcing factor है, अगर आप इसे linearized कर दें around a random point x star, ठीक है, where x is representing this like x is some deterministic point, and x given y is really the conditional expectation or the conditional average. Okay, then अगर आप इसे linearize कर दें, you can write what you call the Taylor series of it. ठीक है, write a Taylor series approximation, and the Taylor series approximation can then be written in the terms of in such potential form, and then eventually you can write these dynamics as G को उठाकर the kind of expression that you have developed यहाँ substitute कर दें, तो you're gonna get a nice sweet or a Stein-Uhlenbeck process जो कि और किस्म के dynamics में basically. कि आप climate जो है, so he kind of formulated. So what Hussain did, he saw the relationship between temperature and climate as he modeled it through Brownian motion, ठीक है, and then he formulated a what do you call a set of coupled differential equations, stochastic differential equation for temperature and climate, solve किया उनको और उनकी बुनियाद पर predictions की. So that's a stochastic differential equation where anxiety is a Gaussian process basically. Roughly it's a Brownian motion. ठीक है जी. So what was the key contribution? The key contribution was this. There was a debate kind of that, आज भी लोग ऐसे बैठे हैं, which are what do you call, you can call them the climate skeptics, that जो climate में तब्दीली आ रही है, it's not because of the CO2 level rise या greenhouse gases की वजह से नहीं हो रहा, ये basically natural है, climate eruptions हैं basically, ठीक है. So what he what do you call, Hussain did in his study, that he kind of did calculations that kitna, so this blue curve is representing the calculation how natural sources such as volcanic what do you call eruptions contribute into what do you call change in the climate. Okay, black is the actual data, is really the observation actually. Okay, then he formulated this differential equation, and this coupled differential equation, and the solution of coupled differential equation is this red, what do you call, graph actually. And you can see that this red, fluctuations are meeting kind of more, they are more aligned with the observations actually. Okay? So they are more aligned with observations. So this graph essentially shows that कि जो climate में change है, it's not just due to the natural reasons, it's due to both basically. ठीक है, natural reasons की वजह से भी, और जो हम industrial level पर कर रहे हैं, जो हम mess up कर रहे हैं अर्थ के climate के साथ, both are things that are responsible for change and overall change in the climate of the earth actually. ठीक है जी. And his predictions, so his model turned out to be meeting with what do you call the actual observation, and this is something huge actually. And so this was the second contribution. So मेरी नज़र में दो बुनियादी interesting चीजें की हसलमैन ने, एक ये कि he saw analogy of weather and climate with the Brownian motion, and then the second thing is that he formulated an equation that really goes hand in hand with the actual observational data actually. Okay. Shabazz bhai, shall I move ahead, or you think that we are already late actually?
You have time, I think. चलो ठीक You है, can go like 10 minutes. I'm happy. I'm happy to go for for example another half hour actually. ठीक है, कहता हूँ शायरी सुनाने से नहीं थकता. और हम आपको दाद देने से नहीं थकेंगे, आप सुनाते जाएं. ठीक है जी. So Manabe's contribution, that through his deterministic model he did an actual prediction, ठीक है, of say 2.36 centigrade, और वो वाकई data shows that कि इतना ही climate में तब्दीली हो रही है, average temperature में तब्दीली हो रही है. And then, what Hasselmann did is that he used stochastic calculus to basically make a prediction and to show the human fingerprints on the climate, basically, that कि भाई हम जो है वो भी equally responsible हैं along with the natural reasons for messing up the what do you call climate actually. ठीक है जी. So what's Parisi's contribution for the discovery between the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary role. I mean, if you think of the, say, for example, a complex system, usually it's like, it's like you can formulate it in terms of a many-body problem. There are lots of things, which are interacting, and their interaction is producing something random. Okay. Roughly, that's what you can say the complex system is basically. Okay. For example, those who have done, for example, quantum mechanics, they know that अगर आपके पास एक particle है, you can solve the Schrödinger wave equation very easily for that, for example, particular particle to make predictions. But for example, if you have 10 particles, or 100 particles, 1,000 particles, you'll have a couple. System of differential equation. It becomes very hard to solve them actually. And then you move towards what do you call the statistical mechanics actually to make predictions. But the stochastics is the alternate approach actually. You can study things. यानी आप उनको average out किए बगैर उनको original शक्ल में हम study कर सकते हैं. So what Parisi did, basically, he helped in understanding us the mathematics of the complex disorder. So इसकी छोटी सी मिसाल क्या हो सकती है? फर्ज कर दें you have this rectangular box in which you have, for example, these beads का हैं, particles हैं, फर्ज कर दें ये blower है, ठीक है, जो आपने रखे हैं, और फिर इसे आप squeeze कर रहे हैं, ठीक है, so you are squeezing it from up and down from all sides actually. तो फिर ये gather होंगे in a random in some pattern. अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल इसे एक दफा फिर से स्क्वीज करें, squeeze them actually, ठीक है, this rectangular rhythm, तो अब और अब फॉर एग्जांपल प्रिसाइसली उसी तरह स्क्वीज करें इस सिस्टम को कि जैसे आपने पहले किया था, ठीक है, तो what will happen is that you will have a different pattern. I mean, the question is that I'm giving the same initial conditions, so why I'm getting the different answers actually? The answer is that because it's due to the complex interactions of what you call the particles in the boxes. अब इस किस्म का जो mathematics है, यानी इस किस्म का जो physics है, इसको समझने के लिए you didn't have much actually. So what Parisi did is actually he kind of created some of tricks basically for which he was famous, and he allowed us to basically study more complex systems actually. ठीक है जी. Let me talk quick about it. ठीक है भाई, glass versus spin glass. We know that कि तकरीबन जितने solids जो हमारे गिर्द होते हैं, अगर आप उनका atomic structure देखें तो it's like more crystalline. मगर जो glass है, we know that कि भाई it's kind of an amorphous solid कि जिसमें atoms are arranged but in a more of a random fashion actually. ठीक है. So spin glass is not really glass actually. It's just a magnetic analog of glass. So you call it glass because it's just a magnetic analog of glass actually. ठीक है. Spin glass is the magnetic analog of the glass actually. ठीक है. Let me give you an example. First कर दें. So spin glasses जो है, roughly अगर आप उनका you see what you call their atomic structure, it's crystalline, but the spins that you have,
ठीक है. The spins are, you know, frozen in a random order actually. ठीक है. The spins are frozen in a random order like the glass actually. ठीक है. So you know, spin glass occurs in a material where the atoms themselves do arrange themselves in nice periodic crystal structure, but their spins, the magnetic fields are arranged in a very, very random way actually. ठीक है. इनको समझना is a very, you know, मुश्किल thing. बहुत मुश्किल चीज है. Spin glasses can exist only at a very low temperature. ये बड़ी natural सी बात है, because if you introduce, for example, such a system to, you know, pretty high temperature, what will happen? You know, like, you know, these things, these spins will start to change, and in other words, these spins are no more going to be frozen basically. So in order to have the frozen spin, you need, you know, a lower temperature regime actually. Anyway, ठीक है जी. So टॉय एग्जांपल क्या है? फर्ज कर लें कि आपके पास एटम्स हैं. So you have this arrangements of, say for example, particles कहें, atoms कहें, जो भी आप कहें, ठीक है, couplings, और ये इनकी spins हैं. ठीक है. So like, let's assume that it has spin up and spin down actually. ठीक है. Antiferromagnetic coupling से क्या मुराद है? कि it's kind of an arrangement, ठीक है, in which the spin want to align them in opposite manner. In other words, that the adjacent spins जो हैं, they are opposite always. ठीक है. अच्छा जी. एक say for example, इस किस्म की lattice की, या इस किस्म के say of lattice of particles की, या lattice of spins की. For example, अगर आप energy compute करना चाहते हैं, तो you can compute the Hamiltonian of it, and the Hamiltonian can be computed through what you call such a sum, ठीक है, with J. When I saw it in, for example, original a Nobel Prize document, ठीक है, like it's a random quantity. I couldn't saw that what's interpretation of it, but I'm sure it should be something on the lines of energy. So what does this show? That कि अगर though neighboring atoms have opposite spins, a negative J will be added actually into the sum. Or for example, agar they have a, you know, kind of aligned spins adjacent, तो एक positive J add हो जाएगा. ठीक है जी. So for example, अगर हम ये particular lattice देख लें, ठीक है, ऊपर वाली lattice मेरे ख्याल से ये particular lattice देख लें, तो हम ये कहेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं, ऊपर वाली lattice नहीं है, it's a different lattice actually. यहाँ spins are, for example, anti-aligned, so minus J will be added into the sum. यहाँ, you know, spins are aligned, so the plus J would be added into the sum, and so on and so forth. So in other words, that you can really, you know, sum up what do you call these J's and have a Hamiltonian actually for it. Or, you know, you can later on play with the Hamiltonian to know the more kind of thermodynamic properties of the spin glasses actually. ठीक है. Complex frustration से क्या मुराद है? Frustration have different sources. So फर्ज कर लें आपके पास एक triangular lattice, so one dimensional lattice की जगह पर let's assume that now you have a triangle lattice, और आप इनको align करना चाहते हैं, ठीक है. तो यहाँ this satisfaction that कि ये, you know, anti aligned हो, ये मुमकिन नहीं, ठीक है, इस lattice में. क्योंकि for example, if you for example align, so it's like you have these two atoms, they're anti-aligned, but these two are not going to be anti-aligned, they are going to be aligned actually. In other words, that the two bonds, they're anti-ferromagnetic, but like this bond is really what do you call ferromagnetic actually. ठीक है. So what we want, you know, in such lattices is that we want to have kind of a more and more of anti-ferromagnetic bonds actually, anti-alignments. यहाँ मुमकिन नहीं है, 3-dimensional lattice में ये मुमकिन नहीं है. So I'm going to say that कि ये जो lattice है, ये जो structure है, it's frustrated actually. So there's a frustration here. In other words, that you can't satisfy all bonds. You can't what do you call anti-align all of what do you call spins actually. ठीक है. भले you know आप ये कहेंगे चलें इसे flip अगर मैं कर दूं, इसको अगर मैं flip कर दूं, तो फिर ये दो तो anti-align हो जाएंगी,
but like this would be, what do you call, they'll not be anti-aligned actually. ठीक है, so you can have a geometric frustration. So it's इस किस्म की frustration को, इस किस्म की what do you call, inability to anti-align, or you call spins, is called the geometric frustration basically. But you can also have एक पॉइंट फिजिक्स के हवाले से स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन होगी कि ये क्यों एंटी अलाइन करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो जितने भी ये मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि हाफ के जो पार्टिकल्स हैं फर्मियंस, सिर्फ उनके ऊपर ये कंडीशन है कि वो सेम स्टेट में नहीं रह सकते। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है, तो उसके लिए लेट्स से एस ऑर्बिटल है, तो एक एस ऑर्बिटल के अंदर अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठे रखेंगे तो वो नहीं रहना चाहेंगे। उसके लिए फिर उन्हें अपनी स्पिन जो है वो एंटी अलाइन करनी पड़ेंगी। तो अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेटिस्फाइड ना हो तो वो स्टेट पॉसिबल नहीं होती। दूसरा एक और पॉइंट है जावेद भाई मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, आपने जो पिछली स्लाइड में हैमिल्टोनियन दिखाया था, तो हमारा फिजिक्स वालों का जो हमारे समझ ले हमारी जन्नत होती है, वो होती है सिमेट्री। हम हर लॉ को अपनी किसी ना किसी सिमेट्री के साथ, जो फिजिकल लॉज हैं वो किसी ना किसी सिमेट्री के साथ एसोसिएट करते हैं। कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो सिमेट्रीज का नतीजा है। जब हम हैमिल्टोनियन लिखेंगे नॉइदर्स थ्योरम, यस, तो ये जो हैमिल्टोनियन इन्होंने लिखा है, अब ये होता ये है कि जब आप इसकी ग्राउंड स्टेट निकालेंगे इस हैमिल्टोनियन की, तो ग्राउंड स्टेट डीजनरेट होगी। उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी कि आप सारी स्पिन्स को अप कर लें या सारी स्पिन्स को डाउन कर लें, लेकिन जो सिमेट्री ब्रेक करती है तो वो फिर इस तरह के कॉम्बिनेशंस में चले जाती है कि आपका जो हैमिल्टोनियन है वो इनवेरिएंट नहीं रहता। और अगर आपका हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट नहीं रहता, जो कि लैंडाउ सिमेट्री ब्रेकिंग का प्रोसेस है, तो ये एक हमारे लिए एक्साइटिंग चीज होती है और हम मैथ्स वालों की तरफ देखते हैं। तो आपने जो ज्योमेट्रिकल फ्रस्ट्रेशन दी है, वहां मुझे वो चीज नजर आ रही है। सही। Anyway, इस पर तो आपको बात करनी चाहिए instead of me actually. Anyway, so another source of frustration could be disorder actually. ठीक है, फर्ज कर लें आप, अगर आप फर्ज कर लें आप lattice consider कर देते हैं instead of say for example triangle lattice actually, और फिर फर्ज कर लें you want say for example this arrangement of spins actually, ये आपकी चाहत है। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि जी अच्छा यहाँ जो दो स्पिन्स होनी चाहिए वो एंटी अलाइंड होनी चाहिए, यहाँ जो होनी चाहिए वो अलाइंड होनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, roughly if you want this. ठीक है, but you will see that getting into the more complex kind of system would create kind of more problems actually. ठीक है, फर्ज कर दें कि हम ये I was thinking one thing before moving ahead actually, that अगर कोई यहाँ कंप्यूटर साइंस का बंदा है तो वो एक बड़े मजे की छोटी सी गेम बना सकता है on all this stuff actually, अगर वो इसे समझ ले तो जैसे कैंडी क्रश सागा है, it's like a wonderful game, everyone enjoys it, like I was constantly thinking when I was learning this, मैंने कहा कि यार ये तो इस पर तो छोटी सी जबरदस्त किस्म की गेम बन सकती है जिसमें आप स्पिन्स को ऑपोजिट करें और फिर देखेंगे क्या कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बनती है। एनीवे, सो जी हम यही मैं पिछला मॉडल यहाँ रीड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एरोज रख रहा हूँ। ठीक है, जहां ब्लू होगा इसका मतलब है कि I want to do an anti alignment, और जहां रेड होगा I want that कि जी यहाँ जो है वो जो स्पिन्स हो वो अलाइन हो बेसिकली। ठीक है, so what blue is representing aligned and anti-aligned. Okay, so blue is representing aligned and red is representing anti-aligned. ठीक है, anyway, ठीक है जी, so I can start from here, I can put a put a spin here, जरूरी नहीं है कि मैं up रखूं, I can put in spin up or spin down, doesn't matter, but let's just put a spin up actually. ठीक है, and in order to satisfy this blue bond, ठीक है, I need to put an what do you call a spin that is aligned with the spin of the above actually. ठीक है, और फिर यहाँ भी blue है तो I should have a aligned spin, और यहाँ क्योंकि you have this red bond, I want कि जी यहाँ जो है you should have an anti alignment. यहाँ इनके दरमियान you have a red bond, you should
anti-alignment, ठीक है, but this anti-aligned should be what do you call, और फिर यहाँ you have alignment, anti-alignment, like this part. Now this point is really interesting actually, ठीक है, इससे आप यहाँ आप जो मर्जी चाहे स्पिन रख लें, it can't satisfy the all bonds actually, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे सेटिस्फाई करना चाहें, इसे आप स्पिन अप रख देते हैं, यहाँ अप एरो रख देते हैं, ठीक है, तो it would be aligned with this and it would satisfy this bond, but it won't satisfy, sorry, it would satisfy this bond too, but it won't satisfy this bond actually, ठीक है. So you have a kind of a frustration actually, that in other words that यानी इनके दरमियान ब्लू बॉन्ड होने से क्या मुराद है रफली, ठीक है, दैट दे शुड बी अलाइंड, मगर अलाइन होना इनका मुमकिन नहीं है. अगर ये एरो, ये स्पिन इस स्पिन से अलाइंड है और इस स्पिन से एंटी अलाइंड है, तो लाइक इट कांट बी अलाइंड विद दिस स्पिन एक्चुअली, ठीक है. Anyway, so you have a geometric frustration actually, and you can have lots of other geometric frustrations in this structure as well actually, ठीक है जी. Now what you can do is that जी, all right, so that's a frustration, but this frustration is due to what you call disorder actually. The पिछली frustration, the other frustration was due to geometry, like, but this frustration is frustration due to order, due to what do you call order actually, ठीक है. Anyway, so let me just quickly go through rather than. So what we can do, Jay, what we can do, for example, फर्ज कर लें अब जो bonds satisfy हो रहे हैं उनको मैं अगर एक green arrow से replace कर दूं, और जो satisfy नहीं हो रहे उनको अगर मैं red उससे replace कर दूं, तो this would be the new picture actually, ठीक है. For example, ये bond satisfy हो रहा है, I'm turning it green, ये satisfy नहीं हो रहा, ये भी satisfy हो रहा है, so turning it green, ये satisfy नहीं हो रहा, like these two should be aligned actually, ठीक है, as per this bond, satisfy नहीं हो रहा, so like, okay, so you put a, what do you call, a blue, what do you call, a line that can satisfy नहीं हो रहा. तो you can see that there are lots of bonds which are satisfied, but there are lots of bonds as well which are not satisfied. In other words, that you're not having spins the way you like actually, the way you want to have them actually, ठीक है. So हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसी लैटेक्स का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करूं, तो we can really calculate the energy of it as well, ठीक है. दैट कि जी अगर मैं इस छोटे से पार्ट में देखूं कि जी कितने वो बॉन्ड्स हैं जो सेटिस्फाई हो रहे हैं और कितने वो बॉन्ड्स हैं जो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि जी तकरीबन 1 2 3 4 5 ऐसे बॉन्ड्स हैं जो सेटिस्फाई नहीं हो रहे और 17 बॉन्ड्स सेटिस्फाई हो रहे हैं. हर सेटिस्फाई होने वाले बॉन्ड के लिए हम नेगेटिव जे ऐड करेंगे अपने हैमिल्टोनियन में, और हर सेटिस्फाई ना होने वाले बॉन्ड के लिए हम पॉजिटिव जे ऐड करेंगे. सो दिस विल बी द टोटल नेगेटिव 12 जे एनर्जी एक्चुअली. एंड यू कैन, अच्छा ये भी कर सकते हैं कि आप फ्लिप करें इसे, फॉर एग्जांपल, अच्छा जी अगर ये बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यू ट्राई टू फ्लिप इट, you do the flip of the spin, होगा ये कि you get a new lattice जिसमें the energy really increased actually, while the meta objective here is that कि हम energy को kind of minimize करें. What would be the proper way to say it, Shabazz bhai? I know that I'm not able to say it. जी एनर्जी मिनिमाइजेशन ही है, हम एनर्जी मिनिमाइजेशन करना चाहते हैं for a given lattice actually, ठीक है. So we like more negative J's than what do you call the positive J's, ठीक है. Anyways, if you do 2 flips, for example, so it's like, if you flip these two actually, so what happens is that energy जो है वो minimize हो रही है, but like how we can make sense of all that actually, इसका mathematics क्या होना चाहिए? I mean, if you try to think about the mathematics of it, that's what is really was driving people crazy actually, okay? And Parisi was able to basically propose few things which can sort out such problems actually. You can understand through this cartoon, this toy graph as well actually, that के जी फर्ज कर लें यानी वो वही पिछला सिस्टम आप अज्यूम कर लें, और ये आप अगर फॉर एग्जांपल
स्पिन्स को फ्लिप करके, ठीक है, आप ये कोशिश करें कि आप एनर्जी मिनिमाइज करें, तो you know the energy will variate in a very random way. For example, you did one flip, say for example you did one flip और पता चला जी एनर्जी तो वही है, ठीक है, just a replica of what you know the previous lattice actually. जैसे for example वो जो triangular lattice था, ठीक है, अगर आप उसके बारे में गौर करें तो वहाँ एनर्जी क्या होगी, that would be negative 2j basically, and it would not variate, जो मर्जी चाहे आप जिस मर्जी चाहे स्पिन को आप फ्लिप कर लें, ठीक है. Anyway, and then sometimes it happens that you just flip one and this energy increases, crazily, ठीक है. So in other words, this energy is basically, what do you call, behaving randomly over the flips of the spins actually. Okay, it's flips of the spins. Okay. So like this could be one of the so what I want to actually, we know that हमें ये कैसे पता चले कि भाई so we have some material, it's in glass phase actually. So what we can do is that we can, I should directly go to the replicas, Parisi's replica trick की तरफ basically. इस किस्म के systems को समझना, इस किस्म के systems को समझना मुश्किल काम है mathematically. And what Parisi did is that he created some tricks actually. He created some parameters जिसकी मदद से इस किस्म के systems की thermodynamic properties को समझना possible हो गया. And that was a huge contribution. In the way that he created some of, tricks, some of, tools जिनकी मदद से आप, इस किस्म के spin glasses की thermodynamic properties को, study कर सकते हैं. ठीक है जी. तो जब आप, for example, thermodynamic properties study करना चाहते हैं किसी भी system के लिए, from statistical mechanics, that you have to compute the free energy of the system, or free energy compute करने के लिए आपको logarithm compute करना पड़ता है of what do you call the partition function. ठीक है. And partition function is basically the trace of exponential of the Hamiltonian matrix of your system basically. ठीक है. अगर आप mathematically भी सोचें, अगर आप free energy compute करना चाहते हैं, तो that's a very difficult problem actually. ठीक है. सबसे पहले आपके Hamiltonian में, I mean, you think mathematically, कब आप for example transcendental function evaluate कर सकते हैं at a matrix. ठीक है. Your matrix need to have some properties, like for example वो diagonalizable होनी चाहिए, उसमें ढेर सारी खासियतें होनी चाहिए, तब you can evaluate it at, for example, at transcendental function, and then you want to compute the trace of it, and then you want to substitute that trace into the log. It's a crazy computation actually, especially for the kind of systems that we saw previously, for the kind of lattices that we saw previously. Okay. So the trick is that instead of calculating log z, what you can calculate is that basically calculate this limit actually. And what does this limit mean? Like this limit that जो कि आप FSC में पढ़े होते हैं. So what's the description of it? So take a lattice. ठीक है. आप अपना system लें, उस system का Hamiltonian calculate करें, which is going to be a kind of a matrix. Calculate the log of the matrix of that, for example, calculate the exponential of that Hamiltonian matrix. फिर उसका, for example, z calculate करें, and then log calculate करें. It's a nasty calculation basically. ठीक है. While if you want to compute, for example, z power n, that's much more easier actually. So it's a computational kind of convenience actually, that okay, you take the copies of the replicas of the same systems, ठीक है, और उसके exponentials calculate कर दें, और फिर trace calculate कर दें, just multiply the trace and then look at that trace when n goes to 0 actually. ठीक है. So in other words, that you can calculate this log, जो कि आपको free energy calculate करने में help out करेगा through what you call this limit. So that was something that interesting that we did. मेरे ख्याल से जो central contribution था, जिसकी वजह से, जिसका तज़किरा भी आता है उसमें, Nobel Prize की जो document है, जिसकी तरफ मैं बार-बार refer कर रहा हूँ, कि he kind of introduced a parameter
to study such system. It's Q alpha beta, where alpha and beta जो हैं ये ऐसे समझ लें दो configurations हैं, दो replicas हैं of your system actually, ठीक है? And then Javed bhai, I'm sorry to disrupt you, but sure. if you can conclude. We can conclude. Yeah, that was the last thing actually, ठीक है? So he introduced what you call this parameter, ठीक है? और इस parameters की मदद से आप basically ये predict कर सकते हैं कि which of the configurations are kind of more probable and which are less probable actually, ठीक है? So in other words, thermodynamic properties calculate करना possible हो गया for spin glasses, जो कि आज से कुछ अर्सा पहले मुमकिन नहीं था calculations करना due to the Parisi's contribution, and it becomes possible to study complex systems basically when you apply the Parisi's tricks. ठीक है जी, so I'm just finishing. I just wrap it up actually. So that's it from my side. I know that I talk a lot. ठीक है. Thank you so much, sir. बहुत ज़्यादा informative था. Participants में से किसी का कोई सवाल है तो कर लें. एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ठीक है? Do not trust on a single word that I said in physics. ठीक है? इसको आपने सही से समझना है तो शहबाज भाई से समझें, ठीक है? मैं सिर्फ आपको एक तो I know that कि मेरी technical from the physics point of view is completely non-technical, ठीक है? I don't know, physics वाले जो हैं they describe things with their own culture actually, with their own. So do not trust on anything that I said, ठीक है? यही चीजें आप समझ सकते हैं in a more better awareness, especially about the spin glass and system from शहबाज भाई, ठीक है? I hope that कि मेरी मदद से आपको थोड़ा सा stochasticity का flavor मिला होगा. जी. हम तो खुद इस सहरा के भी जो है ना वो हमारा गर्दी कर रहे हैं. अभी मुझे पता नहीं है चीजों का, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन एमफिल में तो पार्टिकल फिजिक्स थी, कॉस्मोलॉजी थी, तो मैं खुद अभी नया इन चीजों की तरफ आ रहा हूँ, बिकॉज दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज और इनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है. और अगर आप स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस और इन इक्वेशंस को अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये मॉडल्स किस तरह काम करते हैं, तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के हर फील्ड में आपका स्कोप है. तो क्योंकि किसी भी चीज मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज एवरीवेयर, बायोलॉजी में आप चले जाएं, आप इकोनॉमिक्स में चले जाएं, आप सोशियोलॉजी में चले जाएं, आप इवन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में है. मतलब इज अ काइंड ऑफ जिस तरह के कैलकुलस बना के न्यूटन ने कायनात को समझने की कोशिश की थी, तो अब स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस का दौर है, कॉम्प्लेक्सिटी का, क्योंकि जितनी चीजें पैटर्न में हमारे आ सकती थी सीधी वो तो हमने कर ली हैं. अब हमने क्योस और कॉम्प्लेक्सिटी और इन चीजों को उन चीजों की तरफ जाना है जिनको हमने अपनी इनिशियल कंडीशंस में छोड़ दिया था कि हम सिंपल मॉडल करेंगे. और I would say that कि हमेशा ये कहता हूँ, आप कोई एक भी ऐसा I would say that कि प्रोसेस नहीं दिखा सकते in nature जो कि completely deterministic हो. It might be deterministic in its essence actually, ठीक है, but it would appear random to us. जरूर कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स जरूर होंगे कि जो कि रैंडम होते हैं और फिर हम उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं to make our life easier actually, ठीक है. एक और बात मेरे जहन में पार्टिसिपेंट्स में थोड़ा सा समझ लगे इंक्वायरी पैदा करने के लिए, ये जो रैंडमनेस और स्टोकेस्टिक प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं ना, ये इसको हम फिजिक्स में क्लासिकल कहेंगे. इट्स नॉट, बिकॉज क्वांटम रैंडमनेस इज समथिंग एल्स. ये जो रैंडमनेस जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, ये मतलब ये कह लें कि ये हमारे जहन की नाअहली है कि हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन नेचर जो है वो इसको अंडरस्टैंड करती है. ये एक पर्सपेक्टिव है. दूसरा ये है कि नेचर खुद भी इसको अंडरस्टैंड नहीं करती. नेचर को खुद भी नहीं पता कि मतलब नेचर इटसेल्फ इज प्रोबेबिलिस्टिक. तो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं तो मैं क्वांटम रैंडमनेस से जान नहीं छुड़ा सकता. ये एक उसूल है जो क्लासिकल रैंडमनेस और क्वांटम रैंडमनेस को जुदा करता है. तो ये जो रैंडमनेस है ये एक बड़े पैमाने पे, क्योंकि मैनी पार्टिकल्स जहां भी आ जाते हैं वहां पे क्वांटम बिहेवियर, इवन जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है
वो भी एज सच कोई इस तरह की रैंडमनेस इंट्रोड्यूस नहीं करती कि जिसको हम क्वांटम रैंडमनेस या क्वांटम इनडिटरमिनेसी कह सकें। तो ये जो डिटर्मिनिस्टिक की इस्तेलाह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्लासिकल डिटर्मिनिज्म को हम कहेंगे। There is also something on quantum stochastic calculus. Exactly. इस पर भी किताबें लिखी हुई हैं पूरी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पूरा जहान है। So my point is, मैंने नहीं लिखी भाई। I'm not saying so I'm saying is that कि लोगों ने लिखी हुई है। So people are thinking on that. So मेरा नुक्ता ये है कि हमें इस तरफ आना चाहिए, सीखना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं चीजें। और फिर बहुत सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा स्टोकास्टिक प्रोसेस से सीख लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी एक्सेस में आ जाएंगी, जो कि आपको लगता है कि अच्छा ये तो अंग्रेजों के पढ़ने की चीजें हैं भाई, ये हमारे पढ़ने की चीजें नहीं है, या हम इनको समझ ही नहीं सकते। सीधा ये तो हमारी वो जो कॉलोनियल ट्रेनिंग हो गई है, तो हमें लगता है कि बस जो सफेद चमड़ी वाला है वो चीजें कर सकता है, वो सब समझ सकता है और हम नहीं कर सकते। ये तो स्टूडेंट्स को निकलना चाहिए इस चीज से। दे आर आल्सो वेरी इंटेलिजेंट, और इसीलिए मैं इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को हमेशा, और मेरी कोशिश जो है इवेंट्स को करवाने की वो यही है कि यार वो जो क्लासरूम का एक उस्ताद और शागिर्द का रोब वाला एक रिश्ता है ना, उससे निकले बाहर, और ये समझने की कोशिश करें कि इल्म एक मुश्तरका कोशिश होती है इंसानियत की। तो बहुत शुक्रिया सर। और आखिर पे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं जरूर दावत दूंगा कि हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी आप आए। हम कंसेप्चुअल फिजिक्स के नाम से फेसबुक पे भी मौजूद हैं। एक छोटी सी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ चीजें, तो आई डोंट नो लाइक ओके मेरी कुछ चीजें हैं रखी हुई, अगर आप सखर IBA मैथमेटिक्स सर्च करें तो आई हैव फ्यू थिंग्स, स्पेशली आपको स्टोकास्टिक कैलकुलस के लेक्चर भी मिल जाएंगे, मगर ये कि वो बहुत रिगरस हैं, दे आर really what do you call hardcore mathematical actually, ठीक है। So you can find probability and you can find what do you call stochastic calculus discussions also actually, so अगर आप interested हैं तो you can also learn from here actually. Thank you very much. चलें सर, थैंक यू सो मच। No worries. आई एक्सपेक्ट कि हम आपको दोबारा भी तंग करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे आपसे। Sure. मगर फिजिक्स ना पूछाइएगा यार, फिजिक्स सही है। anyway,